Hello everyone, this is CA PRIYANKA from Guwahati. Welcome back to my channel, The Life Baker. And if you are new to this channel, don't forget to click on the subscribe button and the bell button to get notified on my every upload. So guys, as asked by many, here goes a video on how to spend summer vacation at home in this pandemic times. As we know, it is that time of the year जिसके लिए हम लोग बहुत प्लान करते हैं. We plan to travel, we plan to explore, we plan to visit new places. But this year it is not the same. We are confined within the four walls of our house and we are asked to stay home and stay safe. So I have prepared a video where you'll get ideas and tips on how to spend time at home beautifully and with utmost different experience. So let's get started. So the first one is organize your room properly, which is in a mess right now. क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, आपकी क्लासेस चल रहे थे, आपको टाइम नहीं मिला ठीक करने का, तो सबसे पहले उसको ठीक करो ताकि आप फ्रेश फील कर सको, आप एक्टिव फील कर सको. इट इज़ वर्थ लिविंग इन. So organize your room properly and make it beautiful. Secondly, help your parents in household work. It is your duty and responsibility as well to do things which are to be done at home. जैसे हाउस क्लीनिंग हो गया, किचन में हेल्प हो गया. यू शुड नेवर स्टॉप लर्निंग. ओके, शेयर द लोड विद देम एंड you'll see it will make you a good human in future. So share the load. Then invest some time in doing physical activities like dancing, walking, exercising. You can do yoga, meditation. It will help you to feel your soul and make you active throughout the day. So the next is take a trip down the memory lane. This year you cannot travel. You have got ample time to revisit the old times. फैमिली के साथ बैठिए, पुराने एल्बम्स देखिए, पुराने फ़ोटोज़ देखिए, वीडियोज़ देखिए, अपने ट्रैवल फ़ोटोज़ देखिए, बिकॉज इस साल आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो. सो रिकलेक्ट द मेमोरीज विच यू क्रिएटेड लॉन्ग बैक. एन्जॉय द मोमेंट्स विद योर फैमिली. You can also read books, watch documentaries, watch knowledgeable programs under parent supervision. Reading is a very good habit and you should actually inculcate in yourself बहुत छोटे से. अगर आपको रीडिंग का हैबिट होगा तो यू विल नेवर स्टॉप लर्निंग. सो रीड बुक्स, यूटिलाइज द टाइम इन रीडिंग. यू कैन ऑल्सो स्पेंड टाइम इन एक्सप्लोरिंग द क्रिएटिव साइड ऑफ योर्स. जैसे आपने पेंटिंग कर लिया, स्केचिंग कर लिया, कार्ड्स बनाया विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, कुछ क्राफ्ट्स बनाओ फॉर योर पेरेंट्स टू मेक देम फील स्पेशल. Anything which will make your creative side beautiful, you can experiment on that. Do things which you love the most, जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं था, जो बहुत लॉन्ग टाइम से पेंडिंग था और आपको बहुत मन था करने का. जैसे आपको कैलीग्राफी सीखने का मन हो, या आपको कोडिंग सीखने का मन हो, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करने का मन हो, एक्सपेरिमेंट ऑन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, एनीथिंग विच यू रियली फेल्ट लाइक डूइंग इट बट आपको टाइम नहीं मिल रहा था करने का. Go for it, utilize your time. You can also engage yourself in board games instead of mobile games. देखो, board games helps us to spend family time together. जैसे आपने मोनोपोली खेल लिया, सीक्वेंस खेल लिया, ओथेलो खेल लिया, चेस खेल लिया. इट increases your brain power also and family के साथ time spend करने में भी आपको मज़ा आएगा. So get indulged in board games. As we know, most of us are mobile and social media buffs and we really feel like using it all the time. So why not use it to enhance your knowledge? Play online vocabulary games with your friends, online quiz with them. It will increase your knowledge and you will be able to spend time with your mobile as well. This is the most important one. Focus on completing your holiday homework before time. बी कंसिस्टेंट. आप डेली 1 से 2 घंटा पढ़ाई करोगे तो आपका हॉलीडे होमवर्क प्रॉपरली होगा, लास्ट में बर्डन नहीं होगा. यू वोंट जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. आपको उससे कुछ सीखना भी है. स्कूल से अगर आपको कुछ काम मिला है करने के लिए तो वो आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए मिला है, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, राइट. प्लस आपने जो अभी तक पढ़ाई की, आपको उसको भी रिवाइज़ करना चाहिए ड्यूरिंग दैट वेकेशन. थोड़ा डेली पढ़ोगे तो आपको बर्डन भी नहीं लगेगा, आपका टाइम भी यूटिलाइज होगा एंड इट विल हेल्प यू टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल. तो एटलीस्ट 2 to 3 hours यू कैन टेक आउट टाइम फ्रॉम द डे एंड स्टडी. एंड देन द लास्ट वन is connect with your family, with your friends, with nature.
डोंट वेस्ट योर टाइम जस्ट स्लीपिंग ऑल डे. हाफ ऑफ द डे आप सो के बिता दोगे तो फिर नेक्स्ट हाफ आप लेज़ी फील करोगे. मॉर्निंग टाइम जल्दी उठोगे तो you'll be fresh, you'll be active, you'll be able to talk to people, call them, do video calls. उन सब से बात करो कि आप क्या कर रहे हो, आप पूरे दिन क्या करते हो. लर्न समथिंग फ्रॉम देम. यू नो दिस इज़ द टाइम विच यू शुड यूटिलाइज टू कनेक्ट विद योर इनर सोल प्लस द आउटर वर्ल्ड. टॉक टू एवरी वन अराउंड. Just be happy, influence people, and just expand your horizon completely. So guys, that's all on how to spend vacation at home in this pandemic time. Hope we come out of this phase as soon as possible and we get to meet our real friends and teachers. And till then, please take care of yourself. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा. एंड कोई भी टॉपिक पे अगर मेरा व्यूज़ या आइडियाज़ लेना हो तो कमेंट करिएगा यूट्यूब पे. थैंक यू सो मच.